हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरा वर्डप्रेस ट्यूटोरियल में। तो मेरा नाम अजय है। मैं वर्डप्रेस के ट्यूटोरियल्स बनाते रहता हूं और मोस्टली जो वर्डप्रेस में प्रॉब्लम्स आती है उसके ऊपर ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके कुछ ट्यूटोरियल्स बनाता हूं। तो अगर आप न्यू है वर्डप्रेस में तो आप वर्डप्रेस के मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं, मगर ये जो है वो बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है, शायद एक्सपर्ट एंड बिगिनर्स के लिए भी है ये। So if you are WordPress beginners and if you are searching WordPress tutorials for solve something, तो उसके लिए मेरे वीडियोस बनाता हूँ। चलिए आते हैं हम प्रॉब्लम पे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है कि मेरा कंटेंट कुछ डला हुआ है, मगर जब मैं ब्राउज़र में आया हूँ तो ये कंटेंट नहीं दिख रहा है यहाँ पे। जैसे कि मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो इट्स नॉट शोइंग हियर एनीथिंग, ओके। बट जब मैं एडिट करता हूँ तो चलिए मैं एडिट वाले कॉलम में जानता हूँ। तो एलिमेंटर एडिट, सो व्हेनेवर आई एम गोइंग टू द एलिमेंटर एडिट, in edit it's showing, but whenever I came to the main browser it's not showing. So what is the reason behind that? So if you go to the edit sector again, this is my edit section. So in the edit section, I'll tell you where. Now if I go to the edit with Elementor, it's showing here like this one, this every testimonial is also showing here. But once I can check those all the thing in the browser, it's not showing. So what is the reason behind that? The reason is this one only. You go to the Elementor, go to the setting, and after setting, what to do? You just go to the this post section. Maybe your this option are off, okay, maybe this option are. So go to the journal and on this all the things. If you are using some Elementor kit, if you are using Elementor template or WordPress templates, if you are seeing WordPress widgets, then you have on this all the thing. Again go to the advanced. First you can save this, okay, no problem, and go to the advanced again, and advanced go to the this section, this. So maybe it is disabled in your WordPress. So go to the there, enable it again, enable it, and once you can check this all the things. Now I will go to the browser again and let's check it. So it's not showing here. Let's refresh the things and let's check. Now it's showing this, okay. So this is the easy way. After some time, whatever not showing in the browser, it will be show automatically. So don't worry about that. This is the best option to start something which is not visible in browser. Thank you so much for watching my video.